Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to learn about ethical theories of morality. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Ethics. Now what are ethics? The word ethics came from a Greek word ethos which means character. अब वर्ड एथिक्स जो है डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से दैट इज एथॉस जिसका मतलब है करेक्टर. एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट. एथिक्स जो है वो स्टडी है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है एक ह्यूमन कंडक्ट में ह्यूमन सोसाइटी में. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच स्टडीज मॉरल प्रिंसिपल्स. एथिक्स जो है ब्रांच है फिलोसफी की जो कि स्टडी करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में. हेंस एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज मॉरल फिलोसफी और इसी वजह से एथिक्स को मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है. A code of moral standard and conduct for what is good and right as compared to what's bad and wrong. एथिक्स क्या है? मॉरल स्टैंडर्ड एंड कंडक्ट है जो कि हमें बताती है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है इन कंपैरिजन टू कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी है. Ethical dilemma. A situation in which there is a difficulty in choosing between two course of actions. Ethical dilemma वो situation है जिसमें हमें difficulty face होती है कि हम दो course of action में से किस चीज़ को choose करें यानी कि अगर दो situations हैं तो उनमें से किस चीज़ को choose किया जाए. For example, a company's culture when conflicts with personal ethics. कि एक company के जो culture है वो आपके personal ethics के साथ conflict में जब आ जाता है तो that creates ethical dilemma. For example, sexual harassment and discrimination. Ethical behavior. A behavior that is judged according to generally accepted norms of behavior. वो behavior जो कि judge किया जाता है accordingly जो आपके society के rules and regulations हैं उसके साथ. The way to behave when confronted by an ethical dilemma. कि आप कैसे behave करोगे एक ethical dilemma वाली situation में, that would be your ethical behavior. Code of ethics. A set of guiding principles for professionals that help them to conduct their responsibility in a fair and ethical manner. Code of ethics क्या है? हमारे पास set of rules and regulations है, guiding principles हैं जो कि professionals को help करती हैं कि कैसे वो अपनी responsibilities को एक fair manner में जो है perform कर सकते हैं, एक ethical manner में perform कर सकते हैं. कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हर प्रोफेशन के लिए अवेलेबल होते हैं. हर प्रोफेशन का अलग अलग कोड ऑफ एथिक्स होते हैं. बहुत सारे ऐसे एथिक्स हैं जो कि सब प्रोफेशंस में सेम है बट डिफरेंस इन प्रोफेशन क्रिएट्स डिफरेंस इन एथिक्स तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है. और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके एक इंसान जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल बना सकता है, अच्छे तरीके से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकता है. Theories, ethical theories of moralities. Now we know कि what are ethics. तो हम अब कुछ theories को study कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी theories हैं ethical moralities की जिनके थ्रू हम अपनी life को जो है better बना सकते हैं. Ethical theories of morality. Several philosophers has given different theories of ethics. अब several philosophers ने हमें different theories दी हैं ethics के बारे में. A moral theory is a mechanism for assessing that whether a particular rule or action is ethically justified. अब moral theory जो है वो एक mechanism है ये check करने के लिए कि जो हमारा particular rule और action है क्या वो ethically justifiable है या नहीं, क्या वो ethics के accordingly approve हुआ है या नहीं. These theories help us to understand ethics and guide us to make ethical decisions. ये theories हमें help करती हैं ethics को understand करने में और हम कैसे ethical decision जो है वो ले सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये हमें समझाती हैं. Ethical theories answers the following questions और यही theories जो हैं हमारे कुछ questions को answer करती हैं that are what is right and wrong क्या ठीक है क्या गलत है, what acts shall we perform कौन से ऐसे actions हैं जो हमें perform करने हैं, what makes a particular action right or wrong कौन सा ऐसा particular action है जिसकी वजह से एक situation right और wrong हो सकती है, सही और गलत हो सकती है. Consequentialism, also known as teleological theory. Consequentialism को teleological theory भी कहते हैं. To focus on the consequences of action. अब ये theory जो है आपके consequences of action के ऊपर focus करती है यानी कि आपका जो action का जो result होगा उसके ऊपर focus करती है.
An action is right if it promotes best consequences. वो एक्शन ठीक होगा जिनकी वजह से आपकी तरफ पास जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल टेलिंग अ लाई टू सेव समवन्स लाइफ. अब आपने ये प्रोवर्ब जो है वो बहुत बार सुना होगा कि आप किसी के झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है. तो सिमिलर यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर आप झूठ बोलते हो और उससे किसी की जान बचती है तो वो आपका एक्शन जो है वो राइट हो सकता है. Consequentialism has two types. अब consequentialism की हमारे पास दो types हैं. Number one is utilitarian theory. Number two is hedonism. Utilitarian theory. Utilis means useful. This theory works on greater happiness principle. अब ये theory जो है वो आपके happiness principle के ऊपर काम करती है. According to this theory, an action should benefit most people to benefit a society while decision making. अब आपकी ये theory suggest करती है आपको कि आपका जो course of action है या जो भी आप action perform कर रहे हो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचना चाहिए. जब आप कोई decision ले रहे हो तो उसकी वजह से आपकी society में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए. For example, finding a cure for a disease. Finding a cure for a disease ये आपका एक्शन हो गया और जो भी वो बंदा क्योर यूज़ करेगा और उसकी जो लाइफ अगर सेव हो रही है या वो डिजीज़ जो है उसकी वजह से मिनिमाइज़ हो रही है, रिस्क मिनिमाइज़ हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपके एक्शन से जो है वो बेनिफिट पहुंच रहा है. Two types. Act utilitarian, benefit others regardless of the law. कि आप जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो regardless of the law. For example, to approve medicines with minor side effects because drug is able to help more people. यानी कि लॉ के अकॉर्डिंगली आप उनको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स तो प्रोवाइड कर रहे हो ना जब आप अपनी मेडिसिन को अप्रूव करवा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस मेडिसिन के लेने की वजह से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि ये ड्रग जो है वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहा है, उनकी जान बचा सक रहा है, इसीलिए आपने लॉ से या कोर्ट से वो चीज़ अप्रूव करवा दी. दैट इज एक्ट यूटिलिटेरियन. नंबर टू इज रूल यूटिलिटेरियन. बेनिफिट अदर्स बट टेक्स लॉ इनटू अकाउंट एज वेल. कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो लेकिन साथ ही साथ साइड बाय साइड अपने लॉज एंड रूल्स को भी रख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग. कि झूठ बोलना हमेशा गलत है. Number two is hedonism. Something is good if the consequences produce pleasure and avoid pain. जैसे कि हमने पढ़ा था consequentialism में कि कुछ चीज़ें जो है वो अगर जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उसकी वजह से आपको प्लेजर मिल रहा है और वो आपका पेन को ख़त्म कर रहा है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन आपका ठीक है. Believe that pleasure or absence of pain is the most important principle in determining morality of an action. आप ये बिलीव कर लो कि किसी को प्लेजर देने से और उसके पेन को डिमिनिश करने से या हटाने से जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन अगर राइट जो है वो कंसिडर किया जाता है तो वो आपका एक्शन राइट है. अब हिडनिज्म की क्या वीकनेस है? नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लाइट्स अ फायर टू गिव वार्म टू समवन बट इट बर्न्स द हाउस इंस्टेड. हिडनिज्म की वीकनेस ये है कि वो एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं बताता कि उसकी वजह से सामने वाले को क्या नुकसान पहुंच सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदे ने जो है फायर जो है वो लाइट की है ताकि दूसरों को जो है वो गर्माहट जो है वो वार्म जो है वो फील हो सके, लेकिन इंस्टेड क्या होता है कि वो हाउस ही जो है वो जल जाता है. नंबर टू में हमारे पास आ जाती है डियोनोलॉजिकल थ्योरी. डियोन मीन्स ड्यूटी, टू फोकस ऑन मॉरल रूल्स एंड रीजंस. कि आपने अपने मॉरल रूल्स एंड रीजंस के ऊपर मेनली फोकस करना है. एंड एक्शन इज राइट इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. आपका वो एक्शन सिर्फ राइट होगा जो कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली होगा. People should follow the obligations and duties when analyzing an ethical dilemma. लोगों को जो है अपनी ऑब्लिगेशंस यानी कि अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो याद रखनी होंगी, एनालाइज करनी होंगी जब भी वो कोई एथिकल डिलेमा को या एथिकल सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस एंड फॉलो द लॉ. फॉर एग्जांपल कि आप अपने प्रॉमिस को भी याद रखो लेकिन साइड बाय साइड अपने रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि लॉज को भी जो है वो फॉलो करते रहो. अब डियोनोलॉजिकल थ्योरी की क्या वीकनेस आई है? नो रैशनल एंड लॉजिकल बेसिस फॉर डिसाइडिंग द ड्यूटीज. कि हमारे पास कोई रैशनल नहीं है, कोई भी हमारे पास लॉजिकल बेसिस नहीं है कि कौन से इंडिविजुअल को कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है. फॉर एग्जाम्पल, समवन ओपन एन ऑर्फनेज टू हेल्प अदर्स. कि एक इंडिविजुअल ने जो है वो ओपन किया है ऑर्फनेज ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके.
but has a hidden message for making money. لیکن اس کا ایک ہڈن میسج اوپن کرنے کا یہ ہے کہ وہ پیسے کما سکتا ہے آرفنیج سے. آرفنیج سے پیسے آپ ایسے کما سکتے ہو کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اگر آرفنیج اوپن کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈز پرووائڈ کرتی ہے ان بچوں کو ریز کرنے کے لیے, ان بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, کھانے پینے کے لیے, کپڑوں کے لیے. تو اس کے تھرو کیا کر سکتا ہے ایک انڈیویجول پیسے بنا سکتا ہے, جو کہ ایک ہڈن میسج ہے. اور the duty to keep time may result in reckless driving and putting others on risk. کہ آپ اپنی ڈیوٹیز کو ٹائم پہ پرفارم کرنے کی وجہ سے کیا کر سکتے ہو کہ ریکلیس ڈرائیونگ یعنی کہ خراب ڈرائیونگ کر سکتے ہو, رولز بریک کر سکتے ہو ڈرائیونگ کے, اور اپنی اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی جان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہو. تو دس از دا ویکنیس آف جینولوجیکل تھیوری. Now we have Kantianism, a type of genealogical theory derived from the work of Immanuel Kant, 1724 to 1804, also called as Kantianism. Genealogical theory کی ایک ٹائپ ہے Kantianism جو کہ ڈرائیو ہوئی ہے Immanuel Kant کے کام سے. We should intentionally follow the obligations and principles. ہمیں intentionally follow کرنی چاہیے اپنی ڈیوٹیز کو اور اپنے principles کو. The difference is of willingness and intention. لیکن ڈفرینس کہاں آ جائے گا آپ کی انٹینشنز میں اور آپ کی willingness میں کہ آپ اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے کتنا willing ہو اور آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. For example, a girl copies her neighbor's homework. So, not all should act the same because if everyone copy each other's work, there will be no work left to copy. اب ایگزامپل ہے ایک لڑکی کی جس نے اپنا جو ہے نیبر کا ہوم ورک جو ہے کاپی کیا تھا تاکہ وہ یہ اوائڈ کر سکے باقی لوگ جو ہیں وہ سیم ایکشنز نہ پرفارم کریں. اگر تو وہ اسکول میں جا کر یہ چیزیں کاپی کرتی تو باقی لوگ بھی اس کو دیکھتے اور سملر ایکشن پرفارم کرتے, لیکن ان دا اینڈ کیا ہوتا کہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول نہ بچتا جو اپنا کام خود کرتا اور پھر کوئی بھی ایک دوسرے سے کاپی نہ کر سکتا. Virtue ethics focus on character to live a life of moral character. ورچو ایتھکس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے کریکٹر کے اوپر فوکس کریں تاکہ آپ ایک مورل کریکٹر کی طرح لائف کو سپینڈ کر سکیں. To judge a person by his character rather than his action that deviates from the normal. آپ ایک انڈیویجول کو اس کے ایکشن کی وجہ سے نہیں جو ہے وہ جج کرتے ہو بلکہ اس کے کریکٹر کی بیسس پر جج کرتے ہو. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ورچو ایتھکس جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. Based on the views of Aristotle, who believes that virtue is the basic ingredient of morality. اب ایرسٹوٹل کی ویو کے اکارڈنگلی وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ورچیو جو ہے وہ بیسک انگریڈینٹ ہے morality کے لیے. For example, a man known for his kindness, if beats a young boy, everyone would say that the young boy must have been the wrong. اب کہتے ہیں ایگزامپل میں کہ ایک انسان جو ہے اگر اپنی کائنڈنس کے لیے جانا جاتا ہے, ایک آدمی جو اپنی کائنڈنس کے لیے جانا جاتا ہے, اگر اس نے ایک لڑکے کو مارا ہے تو لوگ یہ بلیو کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اس لڑکے نے غلط کیا ہوگا انسٹیڈ آف سیئنگ کہ وہ آدمی غلط ہے. Example number 2, consider two shopkeepers both giving correct change to their customers. اب ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 میں دو شاپ کیپرز ہیں جو کہ کریکٹلی جو ہے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. One believe that I shall give correct change to get a good business reputation. ایک شاپ کیپر یہ بلیو کرتا ہے کہ اگر تو وہ اسی طرح سے اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرتا رہے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ گرو ہوگی. Second shopkeeper believes that I shall give correct change because it is morally good. جبکہ سیکنڈ شاپ کیپرز کے انٹینشنز جو ہیں وہ چینج ہیں, وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ اگر تو وہ اس طرح سے اپنی ایتھیکل ڈیوٹیز کو جو ہے پرفارم کرے گا کیونکہ وہ مورلی گڈ ہیں تو یہ چیز اچھی ہوگی. Then we have as rights theory, giving higher priority to the rights established by society. کہ آپ کی جو سوسائٹی نے رائٹس اسٹیبلش کیے ہیں آپ ان کو زیادہ پریورٹی دیتے ہو, ہائی پریورٹی پہ رکھتے ہو. An action is ethical if it is based on the rights of personal and social rights. ایک ایکشن جو ہے وہ ایتھیکلی رائٹ ہے اگر تو وہ اکارڈنگلی آپ کے سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگلی ہے. Rights are correct since large population endorse them. لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں وہ ٹھیک ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. People can bestow rights upon others. For example, a person gives his laptop to his friend for work till afternoon. So the friend has a right on his laptop till that time.
اب لوگ جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی جو رائٹس ہیں ان کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں. کیسے شفٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انڈیویجول جو ہے، ایک فرینڈ جو ہے اپنے دوسرے فرینڈ کو لیپ ٹاپ دیتا ہے ٹل آفٹر نون کے ٹائم تک، تو اس فرینڈ کا اس لیپ ٹاپ پہ آفٹر نون ٹائم تک کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا مٹیریل سرچ کرنا چاہتا ہے، کسی بھی طرح کا کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس ٹائم کے اکارڈنگلی یا اس ٹائم کے ڈیوریشن میں جو ہے وہ کر سکتا ہے. رائٹس تھیوری کا کیا ویکنیس آیا ہے ہمارے پاس؟ رائٹس میڈ بائی سوسائٹی آر ناٹ نیسسریلی کریکٹ. اب وہ کہتے ہیں کہ ویکنیس یہ ہے کہ اگر تو سوسائٹی نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں یا رائٹس بنائے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوں، یا اگر کوئی ایک رائٹ جو ہے یا ایک چیز جو ہے وہ بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. So this was the end of your lecture. Thank you for listening.